Welcome back, guys. Welcome back to Stock Explorer once again. This is Pranav for you all. Today, I wanted to analyze one company called Indusind Bank. अभी रिसेंटली ये स्टॉक 20% गिरा था इसके बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही बेकार क्वार्टरली रिजल्ट की वजह से। बट आई वाज जस्ट रीडिंग कि इतना क्या खराब हो गया भाई बैंक में कि इसको एक ही दिन में 20% डाउन कर दिया, एंड दैट टू निफ्टी 50 स्टॉक। एंड थोड़ा सा देखने के बाद आई फेल्ट कि कंपनी इज स्टेबल। आई मीन एक क्वार्टर खराब गए हैं एंड इट हैज़ बीन द वर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम पास्ट 12 अदर क्वार्टर्स, मतलब 12 क्वार्टर के बाद इतना खराब रिजल्ट आया है। सो आई मीन एक बार में कंपनी को यू कांट स्टार्ट सेलिंग सच अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, आई अंडरस्टैंड कि भाई दैट्स व्हाई पीपल डोंट हैव ट्रस्ट इन दिस बैंक, बट great bank overall. So we'll look at it. We'll quickly talk about its market cap. So if you'll see, banking sector में HDFC Bank has the highest market cap, which is 12 lakh 84,000 crore market cap, जो सबसे बड़ा बैंक है अभी HDFC Bank है अभी। एंड उसके बाद ICICI है, then it's Axis, and then it's Kotak. Now IDBI came up and IndusInd Bank came down because of you 20% गिरा था। P ratio we don't actually see in banks, but I mean knock a PA, which is not valid for banking, as you all know. So what is important when we see for a banking company? It's the NIM ratio, like how much net interest margin are they making. CASA ratio उनका कैसा, account and saving account balance, like what is the amount of money which is coming in. एंड उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज प्राइस टू बुक रेशियो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखी जाती है। एंड करंटली इंडसइंड बैंक अभी आ गया अराउंड 1.2 के प्राइस टू बुक रेशियो, विच इज एक्चुअली नॉट, आई वुडंट फील शाय टू से इट्स अंडर वैल्यूड राइट नाउ। यही स्टॉक अभी कुछ दिन पहले वाज टचिंग, लेट मी शो यू, was touching around 1700 levels, and now it's available at 1000. So one of the good companies, guys. The only bad thing which happened with the bank, CASA ratios का decrease हुआ है, and I was just checking कि क्या क्या खराब हुआ है. So vehicle finance में इनका 25% of the loan book vehicle finance से आता है, and इनकी डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए हैं, 4,12,000 करोड़ डिपॉजिट्स आए हैं, एंड इन्होंने लोन्स दिए हैं 3,57,000 करोड़ के। सो ओवरऑल क्या क्या हुआ है, विल टॉक अबाउट दैट कि क्विकली आपको एक आइडिया भी हो कि हो क्या रहा है कंपनी में। तो जो लोन्स हैं 3,57,000 के आए हैं, तो 13% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, एंड 3% क्वार्टरली इंक्रीज हुआ है लोन। तो लोन बुक इंक्रीज हुई है क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर भी। डिपॉजिट्स में भी इंक्रीमेंट है, 15% ईयर ऑन ईयर डिपॉजिट्स बढ़े एंड 3% के हिसाब से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। कासा विच इज करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो बैलेंस है, वो ईयर ऑन ईयर 5% बढ़ा है एंड क्वार्टर क्वार्टर ओनली 1%, विच इज फाइन। टर्म डिपॉजिट्स 2,64,000 crore, which is increment 21% and 5% quarter on quarter. Total assets भी इनके बढ़े हैं 5,43,000 crore, 14% ईयर ऑन ईयर एंड 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये इनका इंक्रीज और डिक्रीज जो हुआ है बताया। अब नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उनकी 5,347 करोड़ हुई है, विच इज एन इंक्रीज ऑन ईयर बट 1% का डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव रिटर्न आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। टोटल अदर इनकम में 2,185 करोड़ की इनकम का डिक्रीज है, 4% का ईयर ऑन ईयर एंड 11% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो इनकी यहाँ पे जो अदर इनकम्स हैं वहाँ पे बहुत एक ड्रास्टिक डिक्रीज हुआ है, 11% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रेवेन्यू में देखा जाए तो 7,000 करोड़ की रेवेन्यू की इन्होंने, जो कि 2% इंक्रीमेंट है साल दर साल, बट 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाए तो दोनों ईयरली एंड क्वार्टरली डिक्रीज है, 8% साल बाय साल और 9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट में 40% डिक्रीज हुआ है गाइस, दैट्स व्हाई द स्टॉक इज गोइंग डाउन। 40% ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट में डिक्रीज है एंड 39% ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो इनके पहले थे 4.21 के, नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके 4.21 के थे, वो 17 बेसिस पॉइंट्स गिर के आ गए 4.08%, विच इज अ ग्रेट हिट फॉर एनी ऑफ द बैंकिंग। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता क्या है बाय द वे, जैसे मानिए आपसे वो इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, व्हेन यू डिपॉजिट मनी इन सेविंग्स अकाउंट, तो एक बैंक अकाउंट आपको क्या देता है,
5%, 6% इंटरेस्ट देता है। और वही अगर आप किसी बैंक से जाके पर्सनल लोन लेते हैं, देन दे गिव यू द सेम पर्सनल लोन फॉर 14% और मे बी 13%, करेक्ट। तो जो डिफरेंस बचा उसके बीच में 7% का, दैट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर एनी बैंक। बट ऐसा होता नहीं है। बैंक गिव्स 5% का सेविंग अकाउंट पे, एंड जो लोन्स देते हैं, पर्सनल लोन्स, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, सब कुछ मिला के प्रॉब्ली दे मेक अराउंड 11। सो दैट्स व्हाई द नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम्स अराउंड 4 and 5। और जो लास्ट क्वार्टर में 4.2 था, नाउ इट्स डिक्रीज टू 4.03। दैट इज द ओनली वे द बैंक मेक्स मनी। तो रिटर्न ऑन एसेट भी 1% का आया इनका, 90 basis पॉइंट ईयर ऑन ईयर डिक्रीमेंट हुआ है, और 70 basis पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8.11%, 722 basis पॉइंट का डिक्रीज आया गाइस। Such a great hit. They usually used to do 15 to 16% return on equity, ROE जो इनका रहता था, और almost 8 तक पहुंच गया, हाफ हो गया। That's why the company stock went 20% down in one day, and it was badly hit. Right now, what I feel कि it's just one quarter and we should give little time for the company to revive. And I was just checking कि भाई इनके जो मैनेजमेंट है वो क्या कहते हैं कॉन कॉल में। So what the management, the MD Sumant Katpala said on this meeting, that this is only one quarter, guys, and apart from this quarter, they have always outperformed compared to all the other banks. So that's what they are planning. That is quarter mein they did provisioning. They did provisioning for, as you can see here, this is the balance sheet. So in consolidated profit and loss, they did provisioning and contingency of 1,820 crores, which was 974 crores last year in the same quarter, which is an increment. Provision की है उन्होंने, क्यों की है? They did provisioning because of unsecured business. अनसिक्योर्ड बिजनेस, माइक्रो एमएफआई, माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग जो थी, और आरबीआई ने बहुत दिन से बोल रखा था कि देयर इज गोना बी प्रॉब्लम कमिंग अप गाइस, ऑल द बैंक नीड टू बी अलर्ट। तो बैंक ने एक स्टेप अहेड करके प्रोविजनिंग कर ली। So it's better to take provisioning right now rather than taking provisioning in bad times. So अभी good times से stock was doing really good, the company was doing lending on a great basis, अभी उन्होंने provisioning कर ली। So if something happens later and they aren't able to get those unsecured loans back, they have done the provisioning in advance. So I hope they don't have to use that provisioning, but उन्होंने पहले से करके रखी, which is a good thing. And right now they are showing increment in the credit card growth as well. So company is trying to diversify apart from unsecured loan, दो credit cards में भी increment कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो भी जो उनका है वो उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं, पर्सनल लोन को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो जितने भी अनसिक्योर्ड लोन से पहले उसको हल्का सा कम करके वो इन सब चीजों में आगे अपने आप को बढ़ा रहे हैं करंटली। लोन डिस्पर्समेंट भी जो जो सुमन सुमन चालू कह रहे हैं, लोन डिस्पर्समेंट में भी उनका इंक्रीमेंट हुआ है। सो यूजुअली दे यूज्ड टू डू 100 crores ऑफ लोन्स एवरी डे इन मंथ ऑफ सितंबर एंड August. Now they have started doing 180 crores per day loans, which is like 70% increment from last quarter. So loan disbursement भी अच्छा चल रहा है। So right now the only thing which we can look into is the chart. तो भाई कंपनी के स्टॉक इतना गिर क्यों रहा है, एंड वेयर कैन इट स्टॉप? So this is the 200 EMA exponential moving average, which the stock has violated badly since the day उसका रिजल्ट खराब आया। Not the result, but RBI ने उस दिन बोला था कि you need to, all the banks have to be doing provisioning for the unsecured loans, and then all the banks came down at that particular time. अभी जो इसका रिजल्ट खराब आया फिर हाल फिलहाल में 2 हफ्ते के अंदर, स्टॉक ने गैप डाउन किया एंड इट वेंट ऑल द वे डाउन टू 1040 लेवल, जो स्टॉक अभी वापस वहीं आ गया। ओवरऑल आरएसआई भी बहुत वीक लग रहा है, ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में चला गया है, एंड द लास्ट टाइम द स्टॉक टच द सेम लेवल वाज अराउंड 2023 this area. Now the stock is coming to the same support zone which the stock came on 2023. तो 2023 में इस एरिया के आसपास आया था, एंड इट्स कमिंग राइट देयर राइट नाउ। दूसरी बात एक और चीज दिखानी थी, प्राइस टू बुक, व्हाई आई थिंक दिस स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। सो इफ आई विल गो डाउन एंड सी ऑल द कंपैरिजन ऑफ द बैंक्स, तो एचडीएफसी बैंक का प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 2.7 का है। बाय द वे प्राइस टू बुक वैल्यू अगर कम हो तो इट मींस, ज्यादा हो तो इट मींस इट्स ओवर वैल्यूड, एंड इफ इट्स लेस देन 1 इट मींस अंडर वैल्यूड।
So you can see ICICI Bank at 3.4, Axis ka 2.14, Kotak ka is 3.03, IDBI is 1.82, and Indusind Bank, out of all the great companies, it's down to 1.25. It's coming really nice valuations, guys. It doesn't mean that you have to go all in this stock. I'm not telling you to buy any stock right now. This is just a fundamental study for you all to understand Indusind Bank. So आप देख सकते हैं it's coming at a great valuations. Apart from that, ROE, they usually used to do 15% to 16%. इस क्वार्टर में they reported 8%. तो इसका ये मतलब नहीं कि हर क्वार्टर में उनको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी. They have done the provisioning. This was the right decision with the management thought at that time, and they took. So that's the good thing. Like the quarter which result came was from the previous quarter, जिसके अंदर श्राद्ध थे, मॉनसून का इफेक्ट था, एंड लोनिंग में इफेक्ट आया था. So it affected all the businesses. And currently, which we are expecting in the second half H2, festival season will be very positive and strong. So वहाँ पे we can expect strong demand from loans, all the corporate loans and the vehicle loans as well. And I will also like to show you like what is the percentage of the loaning which they do for vehicle financing. So as you can see here, I'll zoom it for you all. In vehicle financing, in commercial vehicle, they do 10% of their loaning comes from commercial vehicle, which is around 34,183 crores. Passenger vehicles, they do 27,000, which is 8%. And small commercial vehicles, 4,000, which is 1%. They even do two wheelers, 4,900 crores comes from there. Tractors also 2%, and equipment financing as well. If you have to buy like JCB or something, they do that too. नॉन व्हीकल फाइनेंसिंग में दे डू बिजनेस बैंकिंग, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी को रीबिल्ड करना है देन यू कैन टेक प्रॉपर्टी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी. क्रेडिट कार्ड का काफी मेजर रोल है, 10,000 करोड़ का गाइस, यू कैन सी हियर, एंड दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज दैट एज वेल. पर्सनल लोन 8,000 करोड़ का करते हैं फिलहाल, एंड मर्चेंट एडवांस में 5,000, विच इज decent amount of loan which they give. Microfinancing, which is the most affected one, which gives the most amount of return to them as well. यील्ड बहुत अच्छी आती है माइक्रो फाइनेंसिंग से, बट इट्स अनसिक्योर्ड एंड इट्स रिस्की. दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन इज 9%. मैनेजमेंट इज थिंकिंग कि भाई इसको थोड़ा सा कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं तो एटलीस्ट इसको वहीं का वहीं स्टेबल रखेंगे. विल ट्राई टू मेक श्योर दैट दे आर गिविंग बैक द लोन, एंड बिकॉज उससे यील्ड बहुत अच्छी आती है उनकी. So we'll check quickly at the chart. Like as I was saying, 1,000 is a great support level. So you need to look at this stock around this level, 980 and 1,000. I'm not telling you all to buy any futures or any kind of stock right now. You need to check the stock because this is one of the strongest companies in among all the banking sector. Apart from this, the only last support which I see here is this one, 800 level, and if it breaks that, there's no other level right now. But after looking at the Indian market and Nifty as well, since Nifty is very nicely respecting the 200 EMA, I'll show you. I really think that tomorrow will be a good day, so we'll show you that as well. So as you can see here, Nifty has come right at 200 EMA and it hasn't violated it. It respected the level. And यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर बाउंस करता है, so it's gonna be another strong resistance around 24,500 for the next weekly expiry. एंड अगर वहां नहीं रुकता है तो गाइस काफी नीचे जाके सपोर्ट दिख रहा है, विच इज अराउंड 21,000 and 22,000. So I hope tomorrow market stabilizes. Look into Indusind Bank, and if you want, don't buy the stock now. Wait for the next quarter result and then look at it. But this was my opinion regarding Indusind Bank. It's a strong company. Sometimes the company don't perform and the form can be weak, but it's a great class of a company. So please look into it. Okay, and have a wonderful evening, guys. And I hope you like the video. Thank you, and do like and subscribe, guys. I've been waiting for your like and subscribe. I really need those likes, which will help me in motivating myself and make more videos about that.